Okay, moving on to the next problem, which is the exercise problem 15-39, in which we have two particles. One is particle A, this car A, that is traveling with a speed VA at an angle of 45 degrees with respect to the x-axis. This car has a mass of 2 mg, that is 2000 kg. Then you have a second car, which is car B. Its mass is given to you as 1.5 mg या 1500 kg आपको इसका mass given है, and that car is traveling towards the negative x-axis with a velocity vb. Now the two cars collide together and the whole system moves with a common velocity of 50 kilometers per hour at an angle of 30 degrees with respect to the y-axis after collision. तो कोलाइड होने के बाद ये दोनों कार जो है वो रिबाउंड नहीं हुई बल्कि एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई और ये पूरा सिस्टम जो है इट मूव्स with a speed of 50 kilometers per hour with respect to the y-axis 30 degrees के ऊपर. You need to determine the magnitudes of initial velocities VA and VB. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है देख के? Yes, sir. Okay, so how we are going to determine these magnitudes VA and VB? Any idea? Yes, sir. Sir, दो unknowns हैं और दो. तारिक आपके एक सेकंड, तारिक आपके अलावा भी लोग अटेंड कर रहे हैं या बाकी सारे सो रहे हैं? जी कोई और स्टूडेंट जो बता सके? देयर आर ऑलमोस्ट 35-36 स्टूडेंट्स इन द क्लास जो अभी शायद अटेंड कर रहे हैं. सो क्या कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा? रिपीट कर दे, मेरी हो गई थी कॉल. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अननोन्स जो हैं दे आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ VA एंड VB, दैट इज द वेलोसिटीज ऑफ कार A एंड B जस्ट बिफोर कोलिजन. ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, ये अननोन है यहाँ. सो हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दोस टू अननोन्स? Is there any external impulsive force acting on the system along the x-axis just before or just after collision during that interaction? बिफोर कोलिजन तो कॉमन स्पीड्स हैं तो नहीं होगा. हमारे पास दोनों के मैसेज हैं, दोनों की जो आपकी वाली वेलोसिटी है वो है, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. दूसरा, आफ्टर कोलिजन जो वाई एक्सिस वाली साइड पे जिनकी ट्रांसलेशन हो रही है वो सारी की सारी VA की वजह से हो रही है. ठीक है. तो उस रिलेशन से हमारे पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा VA का. बेसिकली आपने ये जो पूरी कहानी बताई है अब्दुल्ला, आप चाह रहे हैं कि सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम along x or y axis, so the system's momentum has been conserved along the x as well as y axis. So we can apply the conservation of momentum principle on this system along the x as well as y axis. So 50 kilometers per hour अगर आप इसको convert करना चाहते हैं तो you can convert it. अगर आप convert नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That is 13.89 meters per second. मैंने यहाँ convert किया हुआ है, so it is 13.89 meters per second. So applying the conservation of momentum principle first of all on the system along x-axis, that says that the mass of car A, which is 2000 kg, what is the momentum of car A along x-axis before collision? फिर VA cos 45 into VA. So 2000 into VA cos 45 is the momentum of car A along the x-axis. What is the momentum of car B along x-axis? VB into 1500. So 1500 is the mass, and since B was traveling towards the negative side of x-axis, so it should have a negative momentum. So that's why we have included a negative sign here, and that should be equal to 3500, which is the mass of A and B combined together. 3500 into क्या आएगा इसके साथ velocity? 13.89. 13.89. जी कोई cos sign भी आएगा? Yes sir, 13.89 sin 30. So 3500 into 13.89 sin 30. So this is going to be my equation number 1. Similarly, there is no external impulsive force acting on the system along the y-axis. It means that the system's momentum has been conserved along the y-axis as well. So 2000 into VA sine of 45 plus
Initial momentum car B का क्या है y axis के along? 0. Since car B was traveling along the x-axis, so its momentum along y-axis would be equal to 0, and that should be equal to 3500 into 13.89 cos of 30. So this would be my equation number 2. So I have two equations, two unknowns. Once these two equations are being solved, the value of VA comes out to be 29.8 meters per second, and the value of VB comes out to be 11.9 meters per second. So these are the velocities of this car, these cars just before striking each other.